So welcome to all of you. Let's start with a talk on medium-term outlook. To be honest, most of the discussion here will be for mains examination, but very important for mains examination because survey has some very good recommendations regarding what should India do to become more and more accepted with respect to global growth scenario. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें इसमें होंगी मैं आपको बताता जाऊंगा क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बातें हैं इसमें, जैसे द इम्पैक्ट दैट टैरिफ्स क्रिएट, द इम्पैक्ट दैट ग्लोबल financial crisis can create, the impact that can be done by technological reforms happening around us. So we will discuss all that. Let's begin with things one. So the survey introduces the topic saying globalization is giving way to geoeconomic fragmentation. Globalization is giving way to geoeconomic fragmentation. They will keep calling it GEF. Geoeconomic fragmentation means that now world is getting divided again into two blocks. We are into a second Cold War. I always have believed that now. Since 2018-19 itself, I started believing that second Cold War has started and China and USA are fighting it out. And in that case, what is happening is that we are realignment ka matlab, those who are closer to Americans will get trade deals done through them. Those who are closer to Chinese, dependent on Chinese loans, dependent on Chinese selling products to them, are doing business in that manner. Now, India has a very unique space. We are closer to Americans in the sense of our exports being very high from Americans, and we are closer to Chinese in the sense of our imports being very high from China. So we are kind of, bifurcated both ways. Now, if we go further, we see that Chinese have risen a lot as a manufacturing hub, and that means that other nations' industrial ambitions and global energy transition efforts will be affected. What does that line mean? That Chinese are today controlling a lot of supply chain in renewable energy, a lot of supply chain in lithium-ion batteries, a lot of supply chain in electrical cars. So in that case, if some other country wants to grow and develop its own industries, they will have to contend with the rising might of China. And mind you, Chinese are not at the moment vacating the space, which then means that new industrialization will require competing with the Chinese and finding alternative markets along with that. Also, we see that India faces a unique mix of economic challenges and opportunities. So what does India need to do? India needs to focus on domestic growth drivers, जो आपको क्लासरूम में भी मैं बोलता रहता हूँ कि इंडिया साउथ कोरिया या सिंगापुर की तरह एक छोटा नेशन नहीं है. इंडिया है विथ 1.4 बिलियन पीपल. तो अगर हम 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स बना दें, कंज्यूमर्स कैसे बनेंगे? अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें. एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होंगी? अगर फैक्ट्रीज क्रिएट करें. फैक्ट्रीज किन चीज़ों की? फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फुटवेयर, से लेदर गुड्स, स्मॉल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टॉयज, फर्नीचर. तो इससे लेबर इंटेंसिव ग्रोथ होगा, इनकम लेवल्स बढ़ेंगे. स्किल डेवलपमेंट अगर करें तो अपर एंड पे भी लोगों को काम मिलेगा, एंड दैट विल मेक 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स इन इंडिया, एंड दैट विल गिव इंडियन कंपनीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, द एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एंड दैट लार्ज स्केल प्रोडक्शन विल देन अलाउ देम टू बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव. That is what India has to focus on by looking at how we can use our internal energy to grow faster. Then of course there is a talk on how do we do that? So we reduce the regulatory compliance burden. आप सोच के देखिए 1,05,000 अलग-अलग regulatory compliance rules थे इंडिया में. Last 6 years, government has done a lot of hard work and removed 39,000 of these compliances, but India is still left with 66,000 compliances. There are 2,300 clauses or methods by which an employer can go to jail in India. So, that all is keeping India behind the curve. इसके वजह से हम लोग अभी भी जो बेस्ट सॉल्यूशन दे पाते हैं अपग्रेडेशन का, तो हम कहते हैं रिजर्वेशन बढ़ा दो. द बेस्ट सॉल्यूशन इज अपग्रेड करो लोगों की कैपेबिलिटी, स्किल्स, प्रमोशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग द डिप्राइव्ड सेक्शंस हाउ टू डू न्यू बिजनेस and so on. तो अगर वो करेंगे तो डेवलपमेंट होगा. So that is the idea that regulatory compliance burden should be removed. Economic freedom should be promoted for individuals and small businesses to strengthen medium-term growth. Then of course the survey talks about a medium-term outlook. They have projected a growth rate of 6.3 to 6.8%. 6.5% is also the projection of World Bank for India in fiscal year 26, and 6.2% is the newest projection of IMF for India
दिस इज आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ, कि जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स हैं उनको लगाने के बाद आप कितना सोचते हैं कि आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा, या कितना आपको लगता है कि इंडिया की ग्रोथ रेट कम होगी। तो आईएमएफ ने भी पहले कहा था दैट इंडिया विल ग्रो एट 6.5%। नाउ इट हैज बीन रिवाइज्ड, अभी 5-6 days बैक उनका पेपर आया है नया अबाउट ग्रोथ आउटलुक। सो they are saying 6.2%, but they are saying that it may not happen if India can attract more investments into the country by attracting FDI. So we will have to wait and watch how it goes, but it's an interesting world at the moment, as we all know. And the IMF projection says that India can be a 5 trillion economy by 28 and 6 trillion economy by 30. The target is to maybe try becoming a $10 trillion economy by 2035. So India will have to scale up, reform, grow itself better, because जिस रेट पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं उस पे हमारा टारगेट ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047 पूरा नहीं हो पाएगा। सो इन डॉलर टर्म्स वी विल हैव टू ग्रो एट समथिंग लाइक 8%, 7.5% per annum. Then we will reach that level. Now it's not impossible. In dollar terms, India has grown 7.3% per annum in the last 32 years. So in dollar terms, if India can maintain another 7.5% per annum for the next 23 years, we can be a $20 trillion economy, $24 trillion economy actually, to be precise. So it is possible, but again, we need a lot of reforms in India. We need to make sure the mindset has to change, skills have to be created, states have to compete and collaborate with each other. So all that will be required if we actually want India to grow in that manner. We also see that exchange rate is projected to depreciate to this extent, and GDP at current prices are expected to increase to this level in trillion dollar terms. एक बात समझिएगा, ये जो डॉलर्स हैं और एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन है, ये मिलकर क्या करते हैं कि नॉमिनल जीडीपी को भी इन्फ्लेशन से एडजस्ट करवा देते हैं इन द लॉन्ग रन, बिकॉज डॉलर डेप्रिसिएशन विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल जीडीपी कैन बी डिफ्लेटेड बाय दैट इन्फ्लेशन. तो अगर डॉलर टर्म्स में जीडीपी ग्रो कर रहा है तो भले ही नॉमिनल टर्म दिखे वो, बट वो ऑलरेडी इन्फ्लेशन एडजस्टेड है. आप समझिएगा मेरी बात. अगर मैं बोलता हूं मेरी जीडीपी आज 100 रुपीज है, से इंडियाज जीडीपी इन 2025-26 is 100 rupees. Say rupee dollar exchange rate is 1 rupee to $1. Now I'm just doing it for ease of calculation. So India's GDP in dollar terms 2025-26 in dollar terms is $100. Now suppose the inflation in India is around 3% higher than inflation in US. Suppose India's so in that case, or say even 10% higher than inflation in US. So after 1 year, it can become 1.1 rupee to $1. Of course, real world में इतनी आसानी से चीजें नहीं होती, but अगर हम 20 years का डेटा ले, 15 years का डेटा ले, तो ये खुद में evenly space up हो जाता है. And after 1 year, if my GDP growth in nominal terms rises from 100 to say, just for the sake of calculation, suppose it rises to 121. So if it rises to 121, in nominal terms it has risen by 21%, but we know very well that there is an involvement of inflation which is reflected here in the depreciation of currency. So in dollar terms it will end up rising to $110. तो भले ही nominal terms में ये 21% बढ़ा, but dollar terms में 10% ही बढ़ पाएगा because of this depreciation which has happened, because of inflation playing a role in depreciation. And therefore if nominal GDP is rising in dollar terms and rupee dollar is adjusting according to inflation, then in spite of calling it nominal GDP, we are making our real adjustments. तो ये बहुत जरूरी है जानना, कि कभी कभी कुछ लोग अखबार में लिख देते हैं ये तो नॉमिनल जीडीपी है, हमें तो रियल पे ध्यान देना चाहिए. डॉलर टर्म में अगर नॉमिनल जीडीपी है तो वो रियल के आसपास घूम रहा होगा over a long period. हाँ, अगर रूपी टर्म में नॉमिनल है तो definitely then you have to convert it into real. Okay, then we say that mild rupee depreciation is expected for next 5 years, and that is because India's growth has been decent and attractiveness as investment destination. But this prediction can go wrong, that is rupee can depreciate more in case of global disturbance. अभी हमने देखा था कि जब ट्रंप बने थे राष्ट्रपति और तरह तरह की अनाउंसमेंट्स करनी शुरू की थी, रूपी had depreciated to 88 rupees a dollar within a matter of months.
So saying that rupee will depreciate to 85 and projecting it by 2030 looks realistic. I'm not challenging, but it may go haywire if tomorrow there is a massive depreciation affected due to uncertainty in the global market. Then of course we talk about current account deficit to rise gradually to 2.2% of GDP by 2030. Again, not a very good news because anything above 2% current account deficit will mean that we will need FDI inflow to grow at around 2% GDP into India, and that will need India to be an attractive investment destination. अगर इंडिया एक attractive investment destination नहीं बनता तो फिर current account deficit जो है वो control में नहीं आ पाएगा और हमारे foreign currency deficits बढ़ने लग जाएंगी. Then of course if we talk about geoeconomic fragmentation, we see there has been hyper-globalization, that is a lot of movement of capital, trade, technology and migration. And we see size of the global economy has tripled, and it has actually, so size of the global economy has gone up from something like $30 trillion even 30 years ago to more than $100 trillion today. In fact, in 1980, it was $11 trillion. So it has kind of increased 10 times in the span of last, say, 35 years. And major role has been played by India, China, USA, in that kind of growth that we have seen in last 30 years. Then of course we see that poverty has dropped massively, mainly because of Chinese and Indian growth, which has lifted 1.3 billion people out of it, and nominal growth of USD 10.2% in terms in next 5 years, real at 6.5%. We also see that global trade has risen from 39% of world GDP in 1980 to 60% by 2012, but then today we see it at around 57% of global GDP. So what we see in the last 10 years is that trade has remained stagnant as a percentage of global GDP. The FDI inflows have increased tremendously from $54 billion to $1.5 trillion. Now that's an increase of 30 times in the span of 40 years in FDI flows. And again, India has been a good recipient. Chinese have been a massive beneficiary, but the most important beneficiary has been United States of America. They are the #1 country in terms of receiving FDI. That is what they are doing. Massive increment that they have had. So North America has grown a lot, and United States FDI recipient maximum. Chinese are #2, and then there are others. Japan is there, and so on. कभी-कभी आपका सुनेंगे India has been the largest recipient. India is the largest recipient among emerging markets which belong to lower middle income countries. So that has to be understood. एक बात इसमें अच्छा आगे चलता हूं तो आपको एक बात और बताऊंगा lower middle income country के concept में. The global economy has grown from USD 11 trillion to over 100 trillion, जो मैं आपको अभी बता रहा था in nominal terms. But then geoeconomic fragmentation is going to be a challenge for today's prosperity. We have Russia-Ukraine war, we have protectionism by Trump, we have global rivalries, China and USA, which means every country in the world will be negatively affected by that. So that is again something very important. इसमें एक बात और समझना है, कुछ लोग इंडिया में complacent हो रहे हैं that our poverty line, our poverty has come under control and there is nothing to worry. Because World Bank says that their basic poverty line is $2.1 per person per day. Fair enough. By that account of poverty line, India's poverty will be around 1.6% of population. We're doing great in purchasing power parity terms. But World Bank says that once you become a middle income country, that is once you cross $2,000 per capita, which India has crossed close to around 5 years ago, or 4 years ago, then your poverty should be measured not as $2.1 per person per day. It should be $3.65 per person per day. And if we take $3.65 per person per day as our poverty line, then in purchasing power parity terms, a whopping 28.5% of population is in poverty. This is something that our policymakers should keep in mind. कि अगर हम $2.1 के अच्छे सपने वाले दुनिया में रहे तब तो लगेगा पॉवर्टी खत्म, कोई गरीब है ही नहीं देश में, सब ठीक है. But अगर हम realistic points पे आए $3.65 पे, because the middle income country is expected to do that, still we have a challenge of 28% people not earning $3.65 per day per capita in India. So this is something India should get conscious about, that rapid growth in India along with inclusion is very important, and that becomes a challenge because of the challenging global atmosphere. Then of course, when we talk about geoeconomic fragmentation, it's policy driven. Remember, globalization का policy driven deglobalization हो रहा है.
क्योंकि दुनिया में देशों को ये लग रहा है, ऑफन बाय स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स, ये अमेरिका के ऊपर कमेंट है कि अमेरिकन्स वरिड है चाइनीज ग्रोथ से, और उनको लगता है कि चाइना ग्रो किया क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ एंड चाइना कुड एक्चुअली गेन अ लॉट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो अब वो डीग्लोबलाइजेशन करना चाह रहे हैं टू कंट्रोल चाइनाज ग्रोथ स्टोरी। सो दैट इज स्ट्रेटेजिक कंसर्न जो इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। सो इट विल डिसरप्ट फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल माइग्रेशन, एंड द करंट वेव इज मच ब्रॉडर and more complex than past disruptions. Broader क्यों? Many countries are getting engulfed. More complex क्यों बोल रहे हैं इन्हें? More complex because now many countries have dual version. Like take India for example. We are friendly to Russians and Chinese, and we are friendly to Americans and Western Europeans. So it's a complex wave which is happening. Then of course we see that urbanization has grown. Now एक चीज देखिए, 1980 to 2022 global population is almost doubling up within 40 years. So we are giving rabbits a competition in multiplication. So that is something that we need to get again careful about, because if global population keeps rising at that rate, it won't at this rate, but then it is still rising, which then means there will be too many people with respect to what the earth can sustain. Then of course we see urbanization has increased from 39% to 57%. इसमें एक बात समझिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ती है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, बट अर्बनाइजेशन के अपने सोशल चैलेंजेस हैं. World, many countries in the world, India again included, are used to community living, but urbanization throws the challenge of nuclear living. Many countries in the world are used to non-saving attitude. कैसे सेव क्या करना है, बुढ़ापे में बच्चे ध्यान रख लेंगे, घर परिवार के लोग ध्यान रख लेंगे. But again, nuclear living, living in a city will mean savings rate will have to go up. So it's a different challenge that world will face with rising urbanization and rising economic development. Of course, internet penetration has surged heavily from near zero to 66%, 5.3 billion people. Again, इसके अपने benefits हैं, ट्रेड बढ़ गया, कम्युनिकेशन है, इनोवेशन, ई कॉमर्स नाम की कोई चीज होगी, आज से 20 साल पहले भी लोग सोच नहीं पाते थे इंडिया जैसी कंट्री में. टुडे ई कॉमर्स इज बिकमिंग अ डोमिनेंट थीम. बट साथ में फ्रिक्शंस आल्सो इंक्रीज, डीप फेक वीडियोज आल्सो इंक्रीज, अननेसेसरी र्यूमर्स आल्सो इंक्रीज. यू नो, मान लीजिए मैंने किसी से फोन पे बात की, उन्होंने मेरी बात को आधा बना दिया और आधा बना के सर्कुलेट किया कि ये देखिए सर ऐसा बोल रहे थे. अब मैं शायद 10 मिनट बोला, उन्होंने उसको 5 मिनट कर दिया और किसी को सुनाया, क्योंकि और साथ में इंटरनेट पे भी डाल दिया, टेलीग्राम पे डाला, व्हाट्सएप पे डाला, तो लोगों को लगेगा अरे ये तो सर बोल रहे हैं ऐसा. नाउ बहुत सारे लोग अभी भी एक्सपोज्ड नहीं है इस टेक्नोलॉजी से, इन मेथड्स से, एंड दैट क्रिएट्स द डेंजर ऑफ लॉट ऑफ फ्रैगमेंटेशन विद इन द सोसाइटी. Of course, globalization boosted growth but created inequality, disparities. Groups were left behind. Geopolitical tensions, wars, etc. have deepened these divides. So this is important that, again, survey बहुत clearly extend लेते हैं, आपको जानना ज़रूरी है, that fragmentation is being fueled by Western imposed uniform standards on emission, labor and social norms. Now what does that imply? If Western Europe says, मैं emission norms कम करना चाहता हूँ, well they can do it because they have looted us in the past and they can afford to pay for it. But if India tries doing it, it will always be a restricted challenge. So this is something where Western Europeans and the Americans, they want China and India to have the same rules that they have had. How do we have those same rules unless we don't reach a point where we have same prosperity as them? And we will have same prosperity as them only when they allow us to develop better and compensate us for the losses of the past. Then of course we talk about growth implications. So trade disruption is a maximum feared thing. और mind you, survey लिखा गया था before Trump's disruptions. तो Trump के disruption से पहले ये survey किया गया था, और तब भी इसके बाद भी हमने ये देखा कि ये हालत हुई है. तो this is something we should be careful about. Then of course we see that between October 23 and October 24, WTO members have imposed 169 new trade restrictive measures covering $880+ billion in trade. Now this is very high rate at which deglobalization is happening. हर member अपने restriction लगा रहा है, protectionism पे जा रहा है, WTO के rules को बिल्कुल break किया जा रहा है openly, and that means that we are getting into a world which is more and more deglobalizing. Trade war is actually costing people, and the trade to GDP ratio at 45% is now much more than 16% before कोल्ड वॉर. तो अब अगर हम ट्रेड वॉर करेंगे तो उसका इंपैक्ट और भयंकर होगा कंपेयर टू जो पहले होता था.
Of course, now between 20 and 24, more than 24,000 new restrictions are related to trade have gone into place globally. ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं as examples of rising deglobalization. And these are the data sets you can pick. Now, FDI concentration is happening, increasingly clustered. जो लोग geopolitically aligned हैं, friend shoring और reshoring चल रही है. मैंने पिछली क्लास में external sector में भी आपको explain किया था. So we are doing friend shoring and reshoring, and that raises vulnerability in emerging markets because FDI के लिए हम dependent हैं on advanced economies. But सोचिए अगर अमेरिका इंडिया को छोड़कर जानबूझ के जापान choose कर लें, then okay, Japan is friendly to me much more. That might create problems for emerging markets. Also, global output will decline. Also, technological decoupling losses could add to global GDP fall, and secular stagnation are already beginning. Secular stagnation means a trend showing GDP growth stagnating over a period of time now because of the protectionist policies. All right, then we talk about China's rise and the realignment. So we see global economy is gone a shift. The traditional rules principles have changed because China's dominance is reshaping things. In 2000, China was holding only 6% of global industrial production, but by 2030 it will account for 45%, which is now, UK and US were the only two countries which at a point of time had such a dominance on global manufacturing. And we see here, therefore, that now Chinese have a strategic advantage leveraging in case of all the modern industries. You see, lithium, cobalt, nickel, the rare earth. They also have a lot of strategic depth in electric vehicles, a lot of strategic depth in solar panels, windmills. So that is again something where the world needs to get a little worried. Then of course, we see that, as I told you, clean energy tech, EV production and all. And even in automotive manufacturing, Germany or Japan, जो generally leaders थे, अब Chinese companies उनको हराने लग गई हैं. So that's again something where Chinese are becoming global leaders here. Now, there was an outsourcing model to China. Outsourcing model was that a Ford or a Chrysler or a General Motors or a Volkswagen or a Audi, everybody would try manufacturing their automobiles in China. Similarly, Sony or Philips or Samsung, they will try manufacturing their electronic goods from China because all of it came cheaper to them. So that was called the outsourcing mode in the era of hyper globalization. Now every country is re-evaluating it. They're thinking about China plus one, but India can gain from China plus one only when we bring ourselves as the true substitute. Again, if you go back to our previous session, you will recall I was explaining few things to you. Then we talk about climate transition, China and geopolitics. So climate, of course, is a global public good and it will have impact on everybody. And then survey says that a 1 degree centigrade rise in global temperature could reduce global GDP by 12%, and definitely we are already touching 0.7% rise in global temperature compared to 1750. A matter of time when we will reach 1%, and maybe if we see the projections, the best projections suggest that by 2050 we are going above 1.4%, 1.4 degrees of global warming. So if we want to protect things, climate is the prime thing today. Then of course we talk about high temperatures, extreme weather events, climate cycles being disrupted, cropping pattern being harmed. If you see that the world output growth could be seen to be much better, and this is the amount of output we will keep losing, and we have kept losing rather because of the climate change that has happened in the last 60 years. Now China, US, EU and G7 are emitting 50% of global greenhouse gases, and therefore these economies should take the proportionate impact. India or African countries or other island countries cannot take that proportionate burden of controlling climate change. And then that is why, and these economies are saying they are targeting net zero emissions, but mind you, in case there is a global war outbreak, war doesn't mean only physical war, trade war, investment war, then all this green economy will go for a toss. Everybody will start thinking in terms of their own survival, and that is a threat survey is highlighting. Then of course we look at India's commitment. So Panchamrit, our 5-point climate change pledge. We also talk about renewables being given a significant rise and coal and lignite given a decline. So if you see, coal has been consistently declining in share of power generation, and renewables have been continuously rising. In infrastructure chapter we discussed that also. If we look at energy transition, we see China has a huge role. More than 80% of
total global solar photovoltaic manufacturing is in China, and their manufacturing capacity is double what they need domestically. So automatically, what will they do with the rest of the things? They will export, and that will mean other countries, if they want to develop their own manufacturing units in solar panels, windmills, etc., will find it very difficult, because Chinese have already reached the economies of scale, and they will try reducing the price and then selling it in other countries. So that is the threat survey is highlighting. And Chinese have already invested more than $50 billion in photovoltaic capacity, which is 10 times more than even Europe. And they are home to top 10 global suppliers to photovoltaic energy. Now, if we see 60% of global wind capacity and 80% of battery manufacturing is with China, and Chinese are investing $546 billion in renewables, and even America and European Union combined has invested $321 billion. So we see Chinese are making huge steps in taking lead in futuristic industries, and that is what India should be worried about. और ये हमें वरी इसलिए, मुझे कम से कम वरी इसलिए करता है कि कल भी मैंने एक बियॉन्ड क्लासरूम लिया, तो मैंने देखा हमारे बच्चे जो आपकी उम्र के हैं, जो आप लोग ज़्यादातर लोग मुझे सुन रहे होंगे, 20s के लोग, वो भी अभी कास्ट में फंसे हुए हैं. वो ये सोच रहे थे मेरी कास्ट क्या है, किसी और की कास्ट क्या है. मैं अपने लेवल पे क्लियर कर देता हूँ, मेरी एक ही कास्ट है जिसे भारतीय कहते हैं. आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन इंडियन, एंड प्लीज आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज एन इंडियन, बिकॉज जब चाइना वाले आके डंडा मारेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि आप किस कास्ट के बिलोंग करते हैं. तो जो सो कॉल्ड रिच भी हैं इंडिया के और जो पुअर भी हैं, उन्हें समझना पड़ेगा. ये जो रिच है उनके लिए मेरा एक और मैसेज है, दैट इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग, जो मैं पिछली क्लास में भी कह रहा था, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग इन द लग्जरी coach of a sinking ship, the ship is still sinking. So don't forget that even if you are rich today, if the ship starts sinking, you will be in trouble. भले ही आप luxury coach में आज हैं. So one should be very careful there. Anyways, Chinese are also controlling 70% of global rare earth processing. यहीं पे तो उनको confidence है ट्रंप को हराने का. वो कहते हैं ठीक है, तुम हम पे बैन लगाओ, हम पे टैरिफ लगाओ, हम तुम्हें रेयर अर्थ ही नहीं बेचेंगे, तुम अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बना के दिखा दो हमें. So this is something that they are reaching there. And don't forget, China is still far away from USA. और USA के लिए खतरा है कि उनकी हेजेमनी चली जाएगी. इंडिया के लिए खतरा है कि हमारे एरियाज चले जाएंगे. So India should be even more conscious about China's rise, especially if China chooses not to be peaceful, than even Americans. And therefore India needs to work doubly hard to make sure that we don't get left behind far too much, that we become irrelevant for Chinese. That should never happen. Anyways, coming further, so survey says there's a risk of concentration, that Chinese are reducing their cost because of economies of scale, and there is high supply chain concentration in one country only, China, and that poses a disruption risk big time. IMF estimates suggest 30% decline in global renewable and electric vehicle investments by 2030 under trade fragmentation. So we see a decline big time by IMF due to trade fragmentation that IMF projects, because then many countries won't buy from each other, so global supply chains will get disrupted big time, and this kind of decline in trade is actually detrimental for countries like us, which are now newly developing with a lot of trade-based growth. Then what will be India's path to resilience? So first of all, reduce dependency on imports linked to e-mobility. जो electronic mobility के imports हैं, उन पे dependence China वगैरह जैसी country पे कम करिए. Only 37% of India's urban population has access to mass transit. It is more than 50% in Brazil and China. So India should again think about mass transit rather than private vehicles being used. It also says that invest in metro, buses and integrated transit system can promote clean mobility, decrease congestion and enhance energy efficiency. This will also reduce our oil import bill. So that's another important thing that India should be thinking about for mass movement. Then of course we are trying to boost domestic manufacturing with PLI schemes to support wind battery production, solar energy production, cutting costs, but India still relies on China. Now this is what I was trying to highlight. For 75% of lithium-ion batteries, near zero domestic production of polysilicon ingots, wafers. Now remember, this is something which we need to work upon. नहीं तो ये आगे जाकर हमें badly bite back करेगा. Then of course we talk about decarbonization road. So India has taken its EV imperative. Road transport is contributing 75% of transport sector emissions, which is critical to address for India's net zero goal. Now we need to make sure that we use more electric vehicles, cleaner technology to achieve that.
So that is why EVs are central to this transition. Also, EVs require 6 times more minerals than conventional cars, primarily for batteries. We need to work on that, and India is not self-sufficient in those minerals. So we need to develop our alliance with Argentina, Bolivia, Chile, the ABC of rare earths. Try trading with them. ऐसे factory goods बनाइए जो उनको बेचा जा सके. 2011 तक China was playing only a 9% role, 9% contribution to commodity imports of Argentina, Bolivia and Chile. 9%. जो Chinese manufacturing थी वो इन तीनों कंट्रीज के इंपोर्ट्स में सिर्फ 9% होल्ड करती थी. ये ज़्यादातर अमेरिका से बात खरीदते थे या यूरोप से खरीदते थे. टुडे चाइनीज एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर 48% ऑफ दीज कंट्रीज इंपोर्ट्स. तो होता क्या है, चाइनीज इनको कपड़ा, खाना, फूड प्रोसेस्ड, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल कमोडिटीज, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ये सब बेचते हैं और बदले में उनसे रेयर अर्थ खरीदते हैं. So this is something where Chinese have already established the supply chain, working very hard in the last 15 years. India unfortunately did not wake up early, and that is where we are far behind the curve at the moment when it comes to competition with the Chinese. We also lack domestic processing and availability of key minerals, and 24 of 33 critical minerals face supply chain disruption risks, that Ministry of Mines says. Tomorrow if the Chinese say we are not selling electric minerals to rare earths to people processed, India will be in deep trouble. Now China's dominance is vertical integration. Raw material से लेकर mining से लेकर manufacturing तक वो लोग कर रहे हैं. साथ में निकल का 65%, कोबाल्ट का 68%, लिथियम का 60%, 63% mining and 90% processing happening in India, in China. And that is why we need to make sure that India can respond. Now India has key schemes like faster adoption and manufacturing of electric and hybrid vehicles. We have PLI, we have SPME PCI. We are doing all that, but again remember we have Kabil that has been established to secure overseas mineral returns. But then remember we will have to work very hard out of our skin and very fast pace with a lot of focus and budget given to these, rather than disturbing ourselves with any kind of unnecessary divergence. Anyways, then we talk about the challenges. Rising imports of critical EV components is one challenge in India, which we are taking from China. In fact, last year we purchased more than $22 billion from the Chinese. If I take the entire electric vehicle ecosystem, that is supply chain, and if I take the renewable energy supply chain, तो दोनों मिलाकर हम $22 बिलियन के प्रोडक्ट्स चाइना से खरीद रहे थे इस पूरे इकोसिस्टम का, जो बहुत ही डिपेंडेंट बनाता है हमें उनके ऊपर. And then of course the EV manufacturers are increasingly dependent on Chinese materials and even Chinese know-how. Technology भी हम उन्हीं से सीख रहे हैं. So the strategic recommendations are expand domestic EV system, strengthen R&D in sodium ion and solid based battery, क्योंकि इनमें चाइनीज अभी ग्रो नहीं कर पाए हैं. तो लिथियम आयन बैटरी में चाइनीज के पास काफी लीड है, बट सोडियम आयन इज वेयर इंडिया कैन डू द रिसर्च, और द सॉलिड स्टेट बैटरीज इज वेयर इंडिया कैन डू रिसर्च एंड ग्रो फास्टर. दैट इज द आइडिया. Then secure IP rights in emerging battery tech. That's another important thing, that intellectual property के rights मिले, so that कोई और copy करके हमसे आगे ना बढ़ पाए. Chinese इसमें expert हैं, mind you. And incentivize electric vehicle cell manufacturing under PLI, so that Indian companies will have the incentive to manufacture it within India, and build battery recycling infrastructure so that there is no dearth of batteries in India, and technology transfer agreements and global partnerships so that innovation costs can be shared and India can grow faster. Some other countries will be interested in doing it with us because even they are worried about China's growth, like countries in European Union, Portugal, Italy, France, and similarly even United States of America, because India being a democracy and friendly country to them can be quite attractive. Then of course we talk about implication for India's growth prospects. We need 8% sustained annual GDP growth for at least a decade to achieve Viksit Bharat. We also need investment to rise to 35% of GDP from current 31%. We also need to focus on manufacturing and emerging technology. And we need to create 78.5 lakh non-farm jobs, which we were talking in chapter on employment. And we need to create 100% literacy and future-ready infrastructure. ये बहुत ही gold mine of points हैं. Steps needed to achieve Viksit Bharat. तो अगर तुम इन्हें याद रख लोगे और फिर ये अपने दिमाग में एनालिसिस कर लोगे कि ये करने के लिए हमें क्या करना चाहिए,
तो आंसर टू विकसित भारत पूरा रेडी हो जाएगा. That okay, these are the things we need to create a Viksit Bharat, and what do we do to create that? Survey gives you some answer to that, and we can answer it. तो सर्वे कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या क्या लिए, तो जीएसटी लाए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाए, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लाए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया. सो ऑल दैट इज डेफिनेटली गिविंग ग्रोथ टू इंडिया. MSMEs have been recognized as growth engines, and they are being supported for financial growth, technological inclusion. But the MSME challenges still remain in regulatory burden and informal existence of MSMEs. Now, that's a small firm trap कि firm खुद को बड़ा बनाते ही नहीं है. Firms avoid scaling ताकि regulation से बचे रह सके. सस्ता है इंडिया में कि 150 वर्कर्स के 2 कंपनी चला लीजिए rather than 300 वर्कर्स का एक. नहीं तो आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में आ जाते हैं और उसके वजह से फिर आपका बिजनेस में बहुत सारी डिफिकल्टी आ जाती है. सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड बी केयरफुल दैट let's give support to MSMEs so that they can still keep getting capital, talent, marketing facility, technology, and they keep growing. माइक्रो बने, माइक्रो बड़े होके स्मॉल हो, स्मॉल ग्रो करके मीडियम बने, मीडियम बड़े होके लार्ज बने. स्केलिंग अप से ही जॉब्स क्रिएट होंगे, एफिशिएंसी क्रिएट होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, एंड इंडिया कैन कम आउट एज अ ग्लोबल जाइंट दैट वेज. Then of course the key initiatives that government has taken, PAN 2.0, paperless integration कर रहे हैं across departments. जन विश्वास एक्ट decriminalized 183 provisions. इस बार के बजट में जन विश्वास 2.0 भी अनाउंस हुआ है. Further 61 laws will be decriminalized. तो ये अच्छी बातें हम कर रहे हैं, no doubt. Then we need to ongoing need for reforms due to India's large size plus large population. So we need to employ people. We need to make sure that people have quality job. देखिए नौकरी की कमी नहीं है इंडिया में, क्वालिटी की नौकरी की कमी है. और क्वालिटी की नौकरी तभी आती है जब क्वालिटी का इन्वेस्टमेंट होता हो. सो वी कैन डू गुड क्वालिटी इन्वेस्टमेंट, स्ट्रक्चर विल इंप्रूव, गुड क्वालिटी ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर विल इंप्रूव, एंड देन गुड क्वालिटी जॉब्स विल इमर्ज. सो अ यूथ हु इज अ ग्रेजुएट टुडे और अ पोस्ट ग्रेजुएट टुडे ऑटोमेटिकली कैन नॉट सेटल डाउन टू सेलिंग से पकौड़ाज इन इंडिया. तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मेक श्योर दैट गुड क्वालिटी जॉब्स कैन बी मेड इमर्जेंट. ऑल्सो डाइवर्सिफाइड ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर आदमी सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने को नहीं बने हैं. कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है शू डिजाइनिंग करें, कुछ लोग हो सकता है क्लॉथ डिजाइनिंग करें, कुछ लोग हो सकता है फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान हो, कुछ लोगों का चाइल्ड साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो, कुछ लोग हो सकता है क्रिकेटर बनना चाहते हैं. सो इफ वी कैन क्रिएट डाइवर्सिफाइड ट्रेनिंग and a supply chain structure where facilities are there for everybody to make different careers, then I think there can be better growth of quality of jobs in India. Of course, they say strategic priorities are enhance manufacturing capacity and technology. Know-how is technology, knowledge. Address human capital, resource and political bottlenecks for gross fixed capital formation. ये policy bottlenecks to GFCF क्या है? Restricting investment in multiple activities due to multiple permissions. इतने परमिशन लेने पड़ते हैं हमारे देश में नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि बहुत लोग भाग जाते हैं फिर उस चक्कर में. Similarly, India's middle stand is MSME, especially the medium, the medium enterprise, which will play a very big role in our growth. Medium enterprise, उनको वो काफी रोल प्ले करेंगे हमारे ग्रोथ में. And they say leverage global green capital from sovereign green funds, global pension. Sovereign green funds क्यों? Because India is focused a lot on green based technology rather than any other kind of technology. Also global pension funds like Canada's pension fund, Norway's pension fund, Saudi Arabia's pension fund, that can get us good money for good growth. And align education with employment. पढ़ाई करा के अगर किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं हम तो उन्हें और डेंजरस बना रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लिखना आ गया सोशल मीडिया पे, वो बकवास भी लिख सकते हैं. काम तो है नहीं बेचारे के पास, समझ है नहीं, डिग्री है, तो अब क्या करेंगे? उनको लगेगा बाकी सब मूर्ख, मैं बहुत काबिल. लेकिन ये तो 10 साल बाद पता चलेगा जब इस काबिल आदमी के पास नौकरी ही नहीं होगी ढंग की, और कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खा रहा होगा 10 रुपए कमाने के लिए, और फिर भी फ्रस्ट्रेशन दुनिया पे निकाल रहा होगा कि दुनिया मुझे नहीं समझ पाई, वरना मैं तो कुछ चमत्कार करने ही वाला था.
ये कभी समझा ही नहीं बेचारा कि मैं जो टाइम टाइप करने पे लगा रहा था बकवास, अगर उसमें पढ़ लेता या किसी इंटेलिजेंट आदमी को सुन लेता तो मेरा थोड़ा ज़्यादा भला हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम यहाँ से आती है, एजुकेशन नॉट कनेक्टेड विथ एम्प्लॉयमेंट। देन ऑफ कोर्स बिल्ड स्टेट कैपेसिटी, सरकार की कैपेसिटी बनाइए ताकि बाय लोकल गवर्नेंस एम्पावरमेंट, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, they are the real people delivering work to or development to our people around. How do we carry forward reform? Most importantly, they say unshackle individuals and enterprise from excess regulation. ये बहुत बड़ा ट्रबल है इंडिया का, और ये पिछले 4-5 सालों में बढ़ गया है। कोविड पैंडेमिक के बाद पता नहीं क्या हुआ है, सरकार को वापस बहुत ज्यादा रेगुलेशन लगाने लग गए। This is something India should become conscious. Second, relying on the internal engines and domestic levers of growth is critical. जो मैं पहले ही शुरुआत में एक्सप्लेन कर चुका हूं, internal part of India should be worked upon, and steps should be to learn from each other's best practices to ensure inclusive progress. अब क्या होंगे ये internal engines to growth? With the survey says that going by global protectionist trends, India must remain open, not isolated, doubling down on exports and FDI while benchmarking against global standards rather than past performance. हमें यह देखना चाहिए कि वर्ल्ड में ग्रोथ कितना हुआ और उसके मुकाबले हमारा ग्रोथ कितना हुआ। ये नहीं कि देखो आज से 20 साल पहले हम इतना ग्रो कर रहे थे, आज इतना। 20 साल पहले हाइपर ग्लोबलाइजेशन का टाइम था तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट ज्यादा थे। ट्रेड की बात कर रहा हूं या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, बट टुडे विद द वर्ल्ड शटिंग डाउन, relocating and so on, the same possibilities don't arise. So automatically we should recalibrate and think, okay, what should be my future prospect? Then domestic growth is the key. External sector contribution will be there, but it will be limited. एक और बात हमें समझनी चाहिए, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली $820 बिलियन है इस साल में। आपको पिछले क्लास में ये बता भी रहा था। हमारा जीडीपी $4 ट्रिलियन है, तो हमारा एक्सपोर्ट हमारे जीडीपी का कुछ 20% है। तो ऑलरेडी 80% ऑफ ग्रोथ इन इंडिया is driven by internal factors. If we can focus on these internal factors, India can actually do great in future too. Now 35% investment rate we will need, no doubt about it. अब ये कैसे बढ़ाएं? ये बढ़ाएं by ease of doing business, better infrastructure, साथ में by trusting our corporates in doing business, creating good quality employment which will create high demand, and high demand will encourage the corporates to invest more. So that should be the method of encouraging investments. Global experience shows that high investment rates fuel long-term growth. जापान को देखें, चाइना को देखें, साउथ कोरिया को देखें, सिंगापुर को देखें, हर जगह ये हुआ। इन इन्वेस्टमेंट रेट्स में ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी उतना ही जरूरी है। हमारे करंट सरकार ये बात बेचारे पूरी तरह नहीं समझ पाए। But this is something we should do. Human capital investment, educate people, nutrition them, give them health, and that will mean you will create consumers, capable people, and that's equally important. Then of course, efficiency over quantity, that should be the focus point. Volume पे नहीं, value पे dependent होना चाहिए कि जो investment बना वो output में convert हो जल्दी. You know, that is higher output per unit of investment. इसे ही कहते हैं capital output रेशियो। तो अगर हम इस कैपिटल आउटपुट रेशियो को कम कर दें, दैट इफ आई यूज मशीन, मान लीजिए ये कैपिटल आउटपुट रेशियो 4 है, तो इसका मतलब होता है दैट इफ यू यूज 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यू विल प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर मैं अपने कैपिटल को एफिशिएंट बना दूं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दूं, बेटर क्वालिटी वर्कर दे दूं, और यही कैपिटल आउटपुट रेशियो 3 हो जाए, तो इसका मतलब होगा 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल विल क्रिएट 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो उस केस में if my capital output ratio is 4, say 4, then 35% increase in capital, that is investment, with 4 capital output ratio will give me 8.75 growth rate. But अगर मैं capital output ratio को 3 कर दूं, then a 35% increase in capital will give me 11.66% of growth rate. So same capital will give higher growth. If capital output ratio is reduced, that is capital is made more efficient. Capital का मतलब machines. Capital actually mean करता है funds used to purchase machine, पर यहाँ पर हम capital goods की बात कर रहे हैं। So of course external savings पे बहुत ज़्यादा अब नहीं rely कर सकते, because foreign investments may not come as much as what they used to. So the focus must shift to domestic productivity, capacity creation. But यहाँ पर मैं एक बात से differ करूँगा सर्वे के, external savings can still be attracted
if India can finalize trade deals plus bilateral investment treaties, अगर इंडिया ये दो काम करें तो एक्सटर्नल सेविंग्स आज भी आ सकती हैं. Of course, we should assess and reduce the regulatory costs, deregulate the market, liberalize the market more, economic freedoms to be increased. तो गवर्नमेंट को बार बार मैसेज दे रहे हैं कि भाई एफिशिएंसी पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे ध्यान दीजिए, कमांड एंड कंट्रोल पे नहीं, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पे नहीं. ऑफ कोर्स डीरेगुलेशन का मतलब क्या है? वो कहते हैं दैट एक ग्रोथ कैटलिस्ट है. एमएसएमई के लिए इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज एमएसएमई हैव टू बेयर द मैक्सिमम ब्रंट. ऑल्सो पॉलिसी एफर्ट्स एंड प्रोग्रेस जो किए गए हैं, the government has tried digitization and simplification of regulation, labor law rationalization, decriminalization of business laws, but we need to do much more. Forest deregulation can be done. एक example दिया है कि हमने क्या किया है, trees को भी identify किया है, even जो road side पे trees हैं, as series based forests. तो एक सड़क भी बनानी है आपको तो परमिशन लेना पड़ता है, अपने ऑफिस से अपने गेट तक उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि आप कहते हैं आप पेड़ के बीच में से सड़क बनाएंगे, आप पहले परमिशन लीजिए. दिस इज अ चैलेंज इंडिया फेसेस. मैं एक बड़ी फैक्ट्री लगा रहा हूं, वो फैक्ट्री मान लीजिए 50 एकड़ पे है, अब मुझे फैक्ट्री से गेट तक एक सड़क बनानी है, उसके लिए भी परमिशन मांगना पड़ेगा मुझे, जबकि फैक्ट्री की परमिशन पहले ही इन्वायरमेंटल में ले चुका हूं. सो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स डिस्करेज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया. Amending the building codes in Haryana and Tamil Nadu has made difference. ये हो चुका है. Night shift exemptions दिए गए हैं women को in IT sector in Andhra Pradesh, Karnataka and Haryana. This is creating more women, participation. And UP has relaxed business regulations for hotels. So if we relax these regulations and if we connect it to ease of doing business, then we can have states growing faster and the country does well. Of course, the regulations are outdated and rigid. They have increased the cost of entering the market, discouraged scaling up of companies, and therefore reduced job creation, leading to informal sector. जैसा मैं बता रहा था, cheaper to run 2 150 worker units than 1 300 worker factories. Indian workers overtime formally कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमने लॉ बना रखा है कि overtime वर्क कराना है तो डबल वेज देना ही पड़ेगा. उसका नतीजा है कंपनीज ओवरटाइम वर्क लेती हैं बट फॉर्मली नहीं लेती और वेजेस फिर कम ही मिलते हैं ज्यादा मिलने की जगह. सो इफ वी कैन इंप्रूव अपॉन आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस वी कैन डू बेटर. अगेन compliance costs are high, land use licenses, zoning rules, construction norms, factories to invest in transportation and additional land, flexibility lacking in hire and fire, building norms can reduce usable land. मैं इनको जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारी बातें तुम्हें बता चुका हूँ employment के चैप्टर में, that how employment gets discouraged because of norms in India. तो वहाँ रिवाइज करोगे, you will get the same points there. Then what is the road map for states? First of all, develop ease of doing business 2.0 should be state led. ये देखा गया है कि जिन स्टेट्स ने ease of doing business ज्यादा किया उनकी ग्रोथ भी ज्यादा हुई. अगेन आपको याद होगा अगर, तो जब हम लोग पीछे भी चैप्टर इंडस्ट्री की बात कर रहे थे तो तमिलनाडु का एग्जांपल लिया था हमने, दैट हाउ विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे हैव ग्रोन बेटर. Similarly, states have exclusive power on land building local trade and labor electricity is in concurrent list. So the states can practice these deregulation. That is, there are regulations on municipal laws, citizen charters, land revenue, land reform, town and country planning, and then building and construction planning, bylaws, then labor rules, union codes, water electricity utilities based restrictions, motor vehicles laws, logistics restrictions. ये सारे states के examples हैं regulations के. अगर इन पे states work करें और deregulate करें, the states can amend the primary laws under their jurisdiction and modify the subordinate regulations. In that case, then it will become easier to do business in those states, and the states will grow along with overall growth of the country. Of course, they will require liberalizing the standards and licensing norms. आप सोचिए ड्राइविंग लाइसेंस के ही इतनी चोरी होती है हमारे यहाँ. अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने का तरीका आसान कर दें, स्टेट्स थोड़ा डीरेगुलेट कर दें, वी कैन डू सो वेल फॉर आवरसेल्व्स. सिमिलरली रिवाइजिंग रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड्स, जैसे 300 वर्कर के बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट लग जाता है, इसको 1000 वर्कर कर दीजिए. चाइना के मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज 1500 वर्कर्स के साथ काम करते हैं. सो वी कैन फ्री अप द मार्केट, गिव मोर फ्रीडम टू आवर पीपल, एंड दैट विल एनकरेज मोर एंड मोर growth. Then of course removing barriers to enterprise growth, implementing line by line corrections, क्योंकि हमारे कानून इतने अजीब से बने हुए हैं कि उसके वजह से डिस्क्रिशनरी पावर बहुत आ जाती है बहुत बार लोअर ब्यूरोक्रेसी के पास, एंड करप्शन कम्स आउट ऑफ दैट. सो लाइन बाय लाइन करेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग.
freedom. And you see, states should consider deregulating models from within India and abroad. For example, Andhra Pradesh, Karnataka and Haryana have moved from prohibition to conditional permission for women in night shifts and now fully deregulated IT, giving them growth. You know, if Gurugram can allow that, Noida can allow that. And if that happens, then we can have a lot of women participation and large scale growth. Similarly, Japan allows mixed use urban development. So in that case, allow for commercial plus residential, mixed use urban development. Korea averages working hours over 6 months. तो हर दिन या हर मंथ का वर्किंग आवर एवरेज मत करिए, 6 मंथ्स में देख लीजिए कि पर डे का वर्किंग आवर क्या रहा. तो छुट्टी वुट्टी मिलाकर आप अपने आप देखेंगे कि वर्कर्स 8 आवर्स काम करें. जैसे हमारे यहाँ रूल है, यू कांट मेक अ वर्कर वर्क मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक. फेयर इनफ. बट जिस वीक में गुड फ्राइडे, महावीर जयंती, ईस्टर मंडे सब पड़ता है, कितना घंटे काम करता है वर्कर उस वीक में भाई? सैटरडे संडे भी बीच में आ गया, सब लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश. What's the point? कैसे कंट्री ग्रो करेगी फिर? So what are we talking? So if it is 48 hours in a day, in a week, let's keep it 48 hours in a week. If you have had holidays more than sanctioned, then work extra hours to compensate for that. वहाँ पे workers extra hour work नहीं करते, लेकिन जब छुट्टी का टाइम है वो बाहर निकल गए, जब काम का टाइम है हमें तो जी इतना काम करना पड़ता है. अब maybe I am programmed to believe that working is the best addiction humans can have, but this is something that gives growth to the entire country. देव देव आलसी पुकारा, इसीलिए हिंदी में कहावत है कि अगर काम नहीं करोगे तो रोते रहो, हाँ जी काम करते हैं, कुछ होता नहीं है. तो कितना काम कर रहे हो वो देखना पड़ेगा. तो इंडिया में वो चैलेंजेस भी हैं. हम मंथली एवरेज कर लें कितना काम किए हो. आप अप्रैल को ले लीजिए, एवरी सेकंड डे इन फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ अप्रैल वी हैड वन डेजिग्नेटेड हॉलीडे और दी अदर. इनको ठीक करना बहुत जरूरी है टू मेक श्योर दैट आवर वर्कर्स आर एफिशिएंट, स्पेशली जो सरकारी नौकरी में है, क्योंकि वहां पर और छूट है तो मजे और ज्यादा हो जाते हैं. तो इसीलिए हम देखते हैं 43% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया बिटवीन एज ग्रुप 20 to 29, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी चाहिए. और 30 प्लस होते होते ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट के 3.6% हो जाता है. क्यों? अब पता चल गया कि एज निकल गया, चलो अब जो नौकरी मिली वो कर लें. सरकारी नौकरी को सख्त बनाइए, काम ज्यादा करवाइए और फायर करिए उनको जो काम नहीं कर रहे और करने दे भी नहीं रहे. क्योंकि कुछ हमारे यहाँ ऐसे भी बैठे हुए हैं जो खुद भी काम नहीं करेंगे और कोई यूथ काम करना चाहता है उसे भी नहीं करने देंगे. निकालिए ऐसों को, बहुत जरूरी है देश की तरक्की. और 4 को निकालिए, 40 सुधर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. सो इफ वी डू इट लाइक दैट, मेक अ वर्क कल्चर. So that is something we should learn. We cannot act like Europeans before becoming rich like them. That is something we should always keep in mind. Nobody says that we should work 70 hours in a week. 48 आवर्स काम करिए. बट फिर मैं रिपीट करूंगा, आप सैटरडे संडे काम नहीं कर रहे और बीच में गुड फ्राइडे भी आया, उसके अलावा महावीर जयंती भी आई, तो आप 4 दिन काम नहीं कर रहे, तो बाकी के 3 दिन में 48 आवर्स तो पक्का काम नहीं कर रहे हैं. तो उस वीक को काउंट हम कर ही नहीं रहे हैं. फिर हमने एक नॉर्म बना दिया, 8 आवर्स अ डे, 6 डेज अ वीक, और बीच में छुट्टी है तो भाई तुम्हारी छुट्टी हो गई. This is something, if we can become a little careful, that is what Korea averages works over 6 months. That kind of thing will be better. Then of course competitive federalism, the different states should compete with each other to make sure that international experiences are implemented, regulatory burdens are reduced. I will add one more thing, not only competitive federalism but even collaborative federalism, so that different states can collaborate also with each other and grow together, and that will give India a very high rate of growth. Then, you know, rather than copying best practices, states should adopt the minimum necessary, maximum feasible approach to regulation. बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जो यूरोप कर रहा है, यूएस कर रहा है? क्या हम उतने अमीर हैं? नहीं. क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है? नहीं. तो हम वो कैसे कर पाएंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? फीजिबल क्या है, क्या हम कर सकते हैं, और अपने रेगुलेशंस को उसके हिसाब से रखें, रादर देन कॉपीइंग अदर्स. देन ऑफ कोर्स एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन. रेगुलेशन लगाने से जो मॉनेटरी कॉस्ट आए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आए, मिस बिजनेस पोटेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आए, इनको ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा that some regulations cost us more than the benefits that they create. Then of course states must assess the unit level impact of rules, कि एक यूनिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे रेगुलेशन कैन कॉस्ट अप टू 97.5 लाख इन लॉस्ट लैंड वैल्यू एंड 521 जॉब्स पर 10,000 स्क्वायर मीटर फैक्ट्री. ये रेगुलेशन की वजह से नुकसान हो रहे हैं हमें. तो अगर हम रेगुलेशंस को ठीक करें, इंडिया सेंटर्ड करें, यूरोपियंस को ब्लाइंडली कॉपी ना करें, वी विल बी मच बेटर ऑफ. Then the poorly conceived rules often create disproportionate burdens. जैसे classifying roadside land as strip forests has led to 250 plus day delays for basic passage approvals. यही मैं आपको समझा रहा था. Then
we have only 644 inspectors for 3.2 lakh factories, which then definitely means that corruption happens. Factories impunitively break the law. उनको पता है इंस्पेक्टर आएंगे ही नहीं, और इंस्पेक्टर्स को पता है मेरा कंट्रोल नहीं है, तो ब्राइब दे देते हैं लोग, या जानबूझ के जब इंस्पेक्टर आए तो थोड़ा बहुत ठीक कर लेते हैं, फिर चीजें खराब हो जाती हैं. Therefore, the law should be made in such a manner which we can administratively apply. अगर हम अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो लॉ बना के क्या फायदा होगा, ये हमें सोचना चाहिए. देन देयर इज अ फेज 1 ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां सर्वे आपको एक रूल देता है कि क्या क्या वहां किया जा चुका है. जो नेक्स्ट फेज है, अगर उसकी बात करें, पहला, स्टेट्स कैन लोअर कंप्लायंस कॉस्ट्स बाय इंश्योरिंग रेगुलेशंस इंपोज ओनली द मिनिमम नेसेसरी बर्डन, लाइक remove prohibitions on women in factory. India's 10 most populous states enforce 139 prohibitions on women. Isko kam kariye. Secondly, abrasive blasting and lead processing are banned in some states but allowed in others. कोई proven special health problems नहीं prove नहीं किए गए हैं, फिर भी beliefs पे banned हैं. इनको study कर लीजिए. अगर सच में खराब है तो किसी स्टेट को नहीं करना चाहिए, और सच में खराब नहीं है तो सभी स्टेट को अलाउ करना चाहिए. Similarly, rationalize parking and building norms so that we can have vertical growth. We should not have very slender structures growing big. We can have big land area, factories being built, and so on. Also, rationalize the norms to boost land use efficiency. कितने जगह हैं जहां पे हम tourism grow कर सकते हैं, hotels को grow कर सकते हैं, restaurants, spas, etc. And all that is restricted because they are not commercial areas. तो ऐसे एरियाज जहां पे ये एक्टिविटीज की जा सके, कमर्शियल ट्रेनिंग बढ़ाई जा सके, डेवलपमेंट्स, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए. देन लीगल सेफगार्ड्स फॉर पेनल्टीज एंड एनफोर्समेंट. बहुत बार स्टेट्स लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, पेनल्टीज इन्फोर्स करते हैं, तो बिजनेस ऑपरेशंस अचानक बंद हो जाते हैं. इससे अच्छा एक लीगल सेफगार्ड होना चाहिए, प्रॉपर लॉ एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए, दैट व्हाट काइंड ऑफ रूल्स आर नीडेड एंड व्हाट काइंड ऑफ रूल्स आर एग्रेसिव. Then of course reduce tariff and fees. अभी बहुत सारे states impose करते हैं tariffs and taxes जो operational cost of doing business बढ़ा देते हैं. बिहार, झारखंड, West Bengal, Himachal Pradesh, they are typical examples of states with very high taxes on local work, and that is something which hurts investments. तो इन states में business नहीं जाना चाहता. अगर इन्हें rationalize किया जाए, global benchmarks पे लाया जाए, we can attract more and more investments. Similarly, lower electricity tariff markups. अभी हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री से ज्यादा टैरिफ लेते हैं ताकि हाउस को सब्सिडी दी जा सके. तो मेरे जैसे गरीब आदमी को सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, और एक माइक्रो एंटरप्राइज को हाई रेट पे इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ता है. कॉन्ट्रडिक्टरी है ये. आई शुड पे द लार्जर बिल एंड माइक्रो एंटरप्राइज शुड पे lesser. So if India can learn that electricity is a universal input, if India can learn that, then maybe we can do much better compared to what we are doing till now. Then of course we also, so you see that is there, that in India we pay 10 to 25% above, but in countries like Vietnam the electricity is offered at below the rate to the manufacturing units, so they become more competitive than us in sectors like textile, footwear, etc. Also adopt risk based regulation. States सभी पे यूनिफॉर्म कंप्लायंस लगा देते हैं, बट आप सोचिए जो स्मॉल कंपनी है उसे उतनी कंप्लायंस की जरूरत ही नहीं है. लार्ज कंपनी पे लगाइए, स्मॉल पे मत लगाइए. तो उस केस में क्या होगा, द स्मॉल कंपनीज विल गेट टाइम टू ग्रो, और जैसे जैसे वो ग्रो करते जाएं असेसमेंट करते रहिए, और जो कंप्लायंसेस आउटडेटेड हो जाएं हटा दीजिए. सो इन दैट केस वी विल बी एबल टू ग्रो फास्टर देन व्हाट वी आर ग्रोइंग राइट नाउ. Risk-based regulation will also allow better allocation of public resources, क्योंकि unnecessary burdens खत्म हो जाते हैं. Then private participation in building safety enforcement. So again, private involvement is much less at the moment. Approvals are needed everywhere, but introduce public-private partnership, clarify the laws of building safety, and that will make sure that private participation will rise. Automatically, we will have building safety plus more buildings, fire NOC, water NOC, NOC with respect to earthquake proof regime, all that can be developed in that manner. So what is the way forward? First, state must treat deregulation as a policy priority, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, because over regulation results in stifling innovation and competitiveness. And then use global examples and how institutionalized deregulation can improve it. So US, UK, New Zealand, these examples survey has given.
So they say a facilitative regulatory environment. Facilitative regulatory environment जो supportive हो, साथ में रेगुलेट करे, शक्की ना हो. ये नहीं कि अपने ही लोगों को शक कर रहे हैं, जानबूझ के ऑफिस में दौड़ा रहे हैं और फिर घूस खा रहे हैं. एंड में पर्पस वो होता है. तो अगर उसको रोकने की कोशिश की जाए, easier norms बनाए जाए, it will be better. और फिर small and medium enterprises can do much better than what they are doing today. Also, deregulation will complement infrastructure development and that will incentivize high growth. Also, the early reforms will help in lifting business sentiment, increasing compliance through trust-based governance, and if people trust the government and the laws are easy to follow, automatically people will follow the law. If the laws are too tough to follow, that is where the disruptions and disturbances come in. So deregulation is no longer optional, it is essential. That is what the survey is saying. So we should try making rules in such a manner that we deregulate as much. Thank you all. With today we come to an end of our economic survey discussion. Thanks a lot for all the support you have kept giving. It's been a great experience every year. I promise I will try keep doing it till I can, and hope to see you very soon for current affair classes, for MCQ classes, the next IAS students. We will do multiple choice questions classes next week. All the best, keep studying and keep supporting the same way. Bye bye, all the best. God bless you.